Really? You want to listen a story? Yes. Okay, just let me wind it up, right? Even I read one today when I was surfing the internet today. So I read one story and I noted down for you. Even I'll let you know some vocabulary words in that. Let me keep it here, right? I noted it in my diary. Are you really interested in that story? Yes. So I'll tell you that, and if you are not familiar with any word, you can ask me, baby. Are you sure? You know, this story is about a prince and his servant. Do you know about prince and servant? Are you interested in this story? Yes. Okay. You know, once upon a time in Mongolia. Mongolia is a country, right? There lived a cruel prince. Do you know the meaning of cruel? He was really cruel. He was nirday, basically. He was not good with his servants, actually. What is cruel? Cruel means that, like, sometimes some people, they are not good with others. They behave bad with others. That person called cruel. Okay? So he was very cruel prince. He was very weak and unkind to his servant. The second word, I guess you are not familiar, that is weak. That's called the evil. You know, Shaitan. He was very unkind with his servants, actually. The servant was very wise. He was very intelligent, like you, like me, and hardworking. He was really hardworking, but still the prince was not satisfied with him. The prince got pleasure out of hitting his servant and would beat the servant back and blue without any fault of his. Do you know the meaning of black and blue? Black and blue, actually, it's a phrase. That means when someone hits someone very badly and there are some spots on his body. You might have seen in the movies, जब कोई किसी को बड़े जोर से डंडा मारता है, जैसे आपने अभी लॉकडाउन में मूवीज देखी हैं. Yes. जब लोगों ने रूल्स तोड़े, वो बाहर गए और पुलिस ने उनको हिट किया, तो बाद में उन्होंने क्या दिखाया घर जाके कि हमारे क्या हो गया, ऑन देयर बैक ब्लैक एंड ब्लू हो गई थी. तो वो अगली बार लॉकडाउन में नहीं गए. सो वो प्रिंस जो था वो अपने सर्वेंट को बड़ी बुरी तरीके से मारता था क्योंकि उसको इसमें प्लेजर मिलता था. प्लेजर मीन्स मज़ा आता था उसको, जैसे हमें मूवीज़ देख के मज़ा आता है ना. सो प्रिंस वॉज लाइक दैट क्रूअल, राइट. What happened one day, the prince and the servant were going to a neighboring country. They were going to another country. What is neighboring? Neighboring is actually as our neighbors, पड़ोसी होते हैं. So as India and there the Pakistan is our neighboring country. So they both were going there. The prince rode a strong and sturdy horse. Prince के पास क्या था, एक बहुत ही तगड़ा घोड़ा था, right? While जो servant था followed him on a frail horse. Frail means that is opposite to strong. That horse was not good. Okay? They had to travel long distance. उनको बहुत लंबा सफ़र तय करना था. After few hours, कुछ घंटे बाद, the sky became overcast and loud thunder. What is thunder? Thunder is like when we see at night time, that is clouds are there and the sky is flooded with clouds and there is a silver line. बिजली कड़कती है ना, that's called the thunder. Could be heard at a distance behind them. The prince was a coward. Like What is coward? Coward means like he was not that strong enough inside. He was डरपोक actually and was very frightened. वो पूरी तरीके से डर चुका था. Frightened means जब डर जाते हैं ना हमें, नाइट में जब लाइट बंद हो जाती है, कई बार आप डर जाते हो and you ask for the help of mama and papa, right? Particularly, he was frightened by the clap of thunder. You know clap of thunder? God. Sorry? And God will help. Exactly. When you're frightened and you just pray to God, definitely God will help you. And by the clap of thunder means when there is a noise, आवाज़ आती है ना, हम clap करते हैं, so there is a noise. That's the same clap of thunder. बिजली कड़कती है उसकी आवाज़ आती है ना. That was there. तो वो बिल्कुल डर गया था प्रिंस. He looked around for a place to hide but found none. उसको कुछ hide means he was trying to hide himself from the thunder actually. Okay? वो कुछ जगह ढूंढ रहा था पर उसको नहीं मिली. His servant had not caught up with him. उसका सर्वेंट जो था वो पीछे रह गया था, उसको पकड़ नहीं पाया था अभी क्योंकि उसका घोड़ा क्या था, वीक था, फ्रेल था. So the prince made his strong servant, I was here, like his servant had not caught with him up yet. So the prince made his strong horse walk slower. उसने अपने घोड़े को स्लो कर दिया था and waited for the servant. और servant के लिए उसने
वेट करना शुरू कर दे कि सर्वेंट उसके साथ आके मिल जाएगा, बिकॉज ही उसको डर लग रहा था, तो सर्वेंट की वेट करने लग गया. व्हेन ही सॉ द सर्वेंट, जब उसने सर्वेंट को देखा, ही शाउटेड ऑन हिम, उसने उसको जोर से आवाज़ लगाई, डोंट लैग बिहाइंड मी. लैग बिहाइंड मीन्स मेरे से पीछे मत रहो, राइट? यू फूल, तुम पागल हो क्या? कीप अप विद मी. कीप अप मीन्स मेरे साथ साथ चलो. इट इज़ अगेन अ फ्रेज, कीप पेस विद. ही सैड टू हिम, मेरे साथ चलो, क्योंकि उसने उसे बताया तो नहीं कि उसको डर लग रहा था, बिकॉज ही वॉज अ प्रिंस एंड हाउ ही कैन टेल टू हिज सर्वेंट. द सर्वेंट रिप्लाइड, सर्वेंट रिप्लाई किया उसको, हाउ कैन आई कीप पेस विद यू, मैं आपके साथ बराबर कैसे चल सकता हूँ? माई हॉर्स इज सो वीक, मेरा घोड़ा बहुत वीक है, वो आपके घोड़े की तरह फास्ट नहीं चल सकता. ऑन हियरिंग दिस, यू नो द हियरिंग मीन्स ये सुनने के बाद. हियरिंग, वी हैव आवर सेंसेस ना, दिस इज आवर हियरिंग सेंस. तो ये सुनने के बाद द प्रिंस वॉज फ्यूरियस एंड ही रोड. डू यू नो द मीनिंग ऑफ फ्यूरियस? No. He was furious and he roared. Furious means he was very loud actually. He was shouting. He was loud, he roared. Basically, roar is a sound of lion, but here he was just shouting loudly on his servant. It means you have not fed the horse well. प्रिंस ने पता उसको सर्वेंट को क्या बोला कि तुमने अपने घोड़े को प्रॉपरली फीड नहीं दिया. दैट्स व्हाई योर हॉर्स इज फ्रेल एंड वीक. वो वीक है. He was not getting his guilty actually. It is all guilty means fault, किसी की गलती होना. तो उसने वो गलती किसको बता दिया? सिर्फ कि सर्वेंट आपकी गलती है, आपने अपने घोड़े को अच्छे से फीड नहीं दिया. So it is your fault. What were you doing all this time, lazy man? And when he called him the lazy, then he stuck the servant on his head and as hard as he could. उसने फिर से उस सर्वेंट को एक बार फिर से मारा उसके सिर पे, जितना जोर की वो मार सकता था. उसके पास एक चाबुक था एक्चुअली, ठीक है, और प्रिंस के पास घोड़े पे चलते हैं ना जब, तो वो लेके चल रहा था, जिसे घोड़े को हिट करते हैं कि वो तेज भागे. Cow. सॉरी, Cow. राइट. एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आगे क्या हुआ? देयर वॉज अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग इन द स्काई. उसके बाद एक स्ट्रीक चली लाइटिंग की, आकाश में काफ़ी सारी बिजली कड़की. जब द प्रिंस वॉज सो फ्राइटन, अब तो वो बुरी तरीके से डर चुका था. यू नो द फ्राइटन वर्ड? फ्राइटन मीन्स Dark. डरना. जैसे लाइट से मैंने आपको पहले बताया था, ठीक. ही वॉज सो फ्राइटन देन ही क्लोज हिज आईज टाइटली. प्रिंस ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, बिकॉज उसको बहुत डर लग रहा था. द सर्वेंट सॉ दिस, सर्वेंट ने ये देखा, एंड सडनली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ. What he did, he took the advantage of this opportunity. उसने एक मौके का फ़ायदा उठाया and swinging his riding whip, जो घोड़ा चलाने वाली वाइप होती है ना, छड़ी होती है, उसने वो उसके घोड़े से ले ली उसके से, है ना. and then he knocked the prince on his head. उसने उसके प्रिंस के सिर पे वो छड़ी मारी. उसने अपना बदला ले लिया एक्चुअली. द प्रिंस थॉट, प्रिंस ने सोचा, द लाइटिंग हैड स्टक हिम, शायद बिजली कड़की और बिजली ने उसके सिर पे कुछ मारा, क्योंकि जब बिजली कड़कती है ना कई जगह पे वो गिरती है. सो प्रिंस थॉट द सेम एंड ही वॉज टेरिफाइड एंड फ्राइटन अगेन. वो फिर से घबराया हुआ था. तो देयर वॉज अ स्माइल ऑन द सर्वेंट्स फेस. यू नो व्हाट्स द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? आपको क्या सीखने को मिला? मेरे को क्या सीखने को मिला? इफ़ अ पर्सन इज़ पावरफुल, यू नो, ही शुड बी वेरी काइंड. His gesture should be very kind with others. When a person has money, Like Babaji. exactly. When someone is powerful, like God gives its or spreads its grace with everyone. It spreads the shadow of grace with on everyone. In the same way, like Prince was powerful, he should be very generous and kind. And a powerful person should never underestimate others' abilities actually, because the Prince was not believing on the strength and abilities of that servant, but servant, he was wise, he was really sharp. When he got an opportunity, he paid him back in the same coin. उसने प्रिंस को उसी की भाषा में जवाब दिया. So who was the right person in this story? The prince or the servant? Servant. So what you will do when you will get the powers? जब आपको powers मिल जाएंगी, you will have money, you will have some strength. So will you be cruel or you will be friendly with others? Friendly. That's a great idea. Thank you. Hope you will just remind this story in your life further. Okay? Thank you.